What's up guys, today we'll be talking about if you do not have time for your exercises, what should you do? So yeah, without any further ado, let's get into today's video. और भाई हाउ योर वर्कआउट्स कमिंग अलोंग? भाई अभी तो जिम्स भी बंद हैं, प्लस फिर लॉकडाउन के चक्कर में काम भी बहुत हो गया है, तो आराम से फिर लॉकडाउन के बाद ही करेंगे। तो भाई क्या प्लान है फिर? ब्रो जिम्स तो अभी तक नहीं खुले हैं और होम वर्कआउट्स करने से फ़ायदा क्या है? और ना वो बात होती है ना, एक जो मतलब टाइम भी नहीं हो पा रहा मेरे पास एक तो इंटेंस वर्कआउट करने के लिए, मतलब चाहिए होती है ना अपने आप को बात, मतलब एकदम फाड़नी है, मतलब वो ना हो नहीं पा रहा है। तो मतलब अभी कोई प्लान है ही नहीं, दे रहा कुछ भी नहीं करेगा यार। ब्रो अब कर क्या सकते हैं, मतलब आई वांट गो ऑल इन ब्रो, मतलब इससे फायदा नहीं है सब बेकार वर्कआउट करने का। So guys, when people decide to go all in, the less experienced ones usually end up with absolutely nothing. Plus, in health and fitness, going all in or all or nothing वाली mentality doesn't usually work. When you say कि यार घर पे ट्रेन करने का फायदा क्या है, जब जिम खुलेगा तभी मैं डायरेक्टली एकदम हार्डकोर ट्रेनिंग करूंगा। एक तरह से आप ये कह रहे हो कि यार मैं गाड़ी की सर्विस नहीं कराऊंगा लेकिन मैं उसे टॉप स्पीड पे भी चलाऊंगा। प्लस हियर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सेट आवर एक्सपेक्टेशंस टू हाई। मतलब कि हमें अपने गोल्स को डायनामिक रखना है। वी हैव टू सेट डायनामिक गोल्स विच बेसिकली मीन्स दोज गोल्स नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वी आर इन। समथिंग इज बेटर देन नथिंग का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड गाइज दिस वर्क्स ईदर वेज। आई मीन अगर आप एक ऐसे इंसान थे जब लॉकडाउन था कि आप उस टाइम पे पूरा डेडिकेटेडली वर्कआउट कर रहे थे, यू वर गिविंग योर 100%, एंड देन आफ्टर द अनलॉक यू weren't able to set realistic goals, which means you weren't able to work out with that particular intensity, you weren't able to work out. So sir, you haven't set dynamic goals. And typically हम इन सारी चीज़ों को बहुत एक petty excuse के साथ टर्म कर देते हैं, which basically is यार टाइम नहीं है मेरे पास। भाई साहब टाइम है आपके पास लेकिन टाइम कम है। नाउ लेट्स सी हाउ कैन यू एक्चुअली सेट डायनामिक गोल्स। तो हम बोर्ड पे चलेंगे, थोड़ा एजुकेशन टाइम। Now guys, this is my goal. Pretty simple. Exercise 60 minutes every day. However, as we just spoke, this goal is not dynamic according to the current situation. So what happens when you go all in is you are typically left with two options, which is यहाँ पे 100% achievement of the goal, यहाँ पे 0%. And what is happening is we're leaving this huge gap. Obviously it seems very small, but it's a huge gap, hypothetical huge gap, and we need to kind of bridge this gap. So instead of going all or nothing, we need to go all or something. Instead of that 0%, what we're going to do here is maybe we're going to say put in 40%. This figure is really important because this needs to be done even on your worst day. So here मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 100 मिनट एक्सरसाइज कर रहा था या 60 मिनट्स कर रहा था, in this case I'd say just do 20 minutes of exercise daily, right? Say for example you were going all or nothing for 5 days a week, जो आपका पहले प्लान था, मतलब कि you were killing it, you were doing 60 minutes of high intensity training, things like that. So यहाँ पे we get, say for example 1 hour if you were working out and you were doing it for say 5 days in a week, so that gives us 20 days for the month, which gives us 20 hours. Super simple math, great. All or nothing में 0 hours, very simple. When we bridge that gap, say for example now we're doing 20 minutes of exercise or any physical activity, obviously आप इसको एक ऐसे way में set करना कि it's kind of making sense for you. 20 minutes of physical activity into every day, which is say for example 28. Gives us a figure I am not able to calculate. I think it should be 56. Yeah, 560 minutes. Now it's your call. Now it's your call to actually see and decide कि do you want to stay with this? Obviously you would want to, but this is not happening right now, so we need to eliminate that possibility. What's happening these days is this: 0 hours, 0 minutes. You are deciding between 0
or 20, where you can easily go for 560 minutes. It's your call now to take this, I'd say, judgment call, whatever you like to call it. Are you okay with 0 minutes, or do you want 560 minutes? Yes, it's definitely lesser than 20 hours, but the whole point here is you're doing something and it's good enough. And good enough, guys, is just fine. अभी 0 हो रहा है, आप कुछ तो करो, something is better than nothing. And that's why all or something. So guys, if you like the video, if you like the whole concept, do give it a thumbs up, do subscribe to the channel and drop a comment down below so that I can know what other videos you want to see next. I'll be making those videos damn soon. Thank you so much for watching and do not forget to share the video, guys. Thank you.